हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रिया लाइफ साइंस के बारे में। सुप्रिया लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल बिजनेस में डील करती है। मेजरली एपीआई मैन्युफैक्चर है। एपीआई स्टैंड फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड इनका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है और मैन्युफैक्चरिंग इनकी रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एक किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी एपीआई मैन्युफैक्चर करती है उनका मैक्सिमम उनकी सप्लाई सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनीज को होती है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए एक इनपुट रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। एपीआई कोई भी एपीआई को यूज करने से पहले उसका डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज से अप्रूवल लेना जरूरी होता है। रेगुलेटरी अप्रूवल होने के बाद ही उस एपीआई को यूज किया जा सकता है किसी भी ड्रग के अंदर। जैसा कि वी हैव ऑलरेडी मेंशन इन दिस स्लाइड दैट API ingredients are the substance in the drugs that are responsible for the beneficial health impact experienced by the consumers. So कंपनी ने अभी तक 38 API मैन्युफैक्चर की है और उनका जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है वो 86 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। एंड कंपनी के अभी 14 यूएसएफडीए की अप्रूवल कंपनी को रिसीव हो चुकी है। तीन पेटेंट कंपनी के अभी फाइल किए हुए जो इन प्रोसेस है। 1200 कस्टमर्स कंपनी के हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 23,806 स्क्वायर मीटर्स में फैली हुई है एंड कंपनी की करंट कैपेसिटी 547 किलोलीटर पर डे है। जो कंपनी ने अभी तक एपीआई मैन्युफैक्चर की है वो डिफरेंट डिजीज के ट्रीटमेंट में काम आते हैं, जैसे एंटी हिस्टामाइन, एंटी एलर्जिक, एंटी अस्थमिक, डिकॉन्जेस्टेंट, एंटी हाइपरटेंसिव, एनाल्जेसिक्स एंड एंटी पायरेटिक, एनेस्थेसिया, ऐसे करके कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए काम में आते हैं। कंपनी को रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज का, जैसे यूएसए फूड ड्रग्स Pharmaceutical and Medical Device Agency, National Medical Product Administration in India, Foods and Drug Administration in India, Health Canada, EDQMs, Australian Government, ANVISA, and Agenzia Italians del Farmaco, then Korea Foods and Drug Administrations. These all are the major regulatory bodies जहाँ से कंपनी के API को अप्रूवल मिला हुआ है। कंपनी के टॉप कस्टमर में इंक्लूड है स्वान फार्मा, सिंटैक एंड एकम, देन मैनकाइंड। These all are the major customer which are included in the company's customer strength. एक इम्पोर्टेंट चीज इस कंपनी के जो एक इम्पोर्टेंट थिंग इज कंपनी के जो टॉप 10 कस्टमर है वो फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो टर्नओवर था उसका 47% कंस्टिट्यूट करते हैं। मींस आउट ऑफ 1200 कस्टमर्स 10 customers contribute to their revenue, their top line 47%. There is a high dependency on these 10% customers. इसको कम करने के लिए कंपनी नए जियोग्राफिकल मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, जिससे नए मार्केट में लॉन्च करने के बाद अपने कस्टमर्स की स्ट्रेंथ को और अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को बढ़ाया जा सकता है। और रेगुलरली कंपनी जैसे 3 एपीआई अभी उन्होंने फाइल किए हुए जो अप्रूवल की प्रोसेस में, ऐसे करके कंपनी नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की कोशिश कर रही है, जिससे नया मार्केट डेवलप किया जा सके और नए कस्टमर्स को डेवलप किया जा सके। Company has a presence of their product in more than 89 countries. एशिया रीजन, अगर इसके रीजन्स टर्नओवर को रीजन्स में बांटे तो सबसे बड़ा टर्नओवर उनका एशिया रीजन से आता है, जहाँ पे 51% कंट्रीब्यूट करते हैं। यूरोप में अच्छा जंप हुआ है जहाँ पे 30% कंट्रीब्यूशन है। वी शुड नोट दैट देयर इज अ यूक्रेन क्राइसिस विच इज गोइंग ऑन इन यूरोप कंट्रीज। अमेरिकन कंट्रीज, रिमेनिंग अमेरिकन कंट्रीज में 12% कंट्रीब्यूशन से, नॉर्थ अमेरिका 3% एंड अदर 4% रेवेन्यू। सो मेजर एक्सपोर्ट जो कंट्रीज में होता है कंपनी का प्रोडक्ट वो एशियन कंट्रीज में है। 76% of the company's turnover is from the export sales. So majorly we can say that डॉलर एप्रिसिएशन का फायदा कंपनी को अभी मिलने वाला है। डॉलर में जिस तरह से ग्रोथ आई है तो डॉलर एप्रिसिएशन का कंपनी को फायदा मिलने वाला है। एक्सपोर्ट सेल्स 76% is a very large chunk of the revenue is coming from the export. Company has come up with the IPO in December 2021 at the IPO price of 274 per share, face value of 2 rupees. जो IPO आया था वो 700 करोड़ का था। 200 करोड़ रुपीस कंपनी के अंदर गए और 500 करोड़ रुपीस कंपनी के प्रमोटर्स ने ऑफर फॉर सेल किया है। इस
पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स के बाद प्रमोटर की होल्डिंग 68.24% है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं है आईपीओ से डेट से। 68.24% का प्रमोटर के पास है। वी सी FII, they are holding 7.13. We can see the trend of FII. They are net sellers since last 1 year, around 2 lakh crore they have withdrawn from the Indian equity markets. So this is the major reason of change in the FII holdings. Then if we see the major shareholder of the company are Nippon Life India Trust Limited, Cohenson's MK Best Idea Sub Trust, Dovetils India Fund Class, Malabar India Fund Limited, Aditya Birla Sun Life, and Hornbill's Orchid India Funds. So majorly they all hold around 10%, 7% are with FII, and 68% to 68.24% are with the promoter. So in the market, all 15 to 17% are there, 7% are 15 to 17% shares are in the market. अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में जो रेवेन्यू 280 करोड़ था, वो फाइनेंशियल ईयर 20 में बढ़कर 319 करोड़, देन 391 करोड़, देन 530 करोड़. सो देयर इज अ शार्प इंक्रीज अराउंड 23 to 25% per annum increase in the revenue of the company. We can see the impact that the company is able to maintain their sales growth along with the sales price, and they are able to maintain their cost of consumption. So there is a sharp increase in gross profit from 133 crore to 334 crore. The GP ratio, which was 48%, is now increased to 63%. And if we talk about EBITDA ratio, then it was 24% to 40%. There is a sharp increase in EBITDA of the company. The interest cost, if we talk about the finance cost, which was 10 crore, is now only 4 crore. All figures are in millions, that 4 crore. So there is sharp decrease in finance cost because of the repayment of the loan company has done. The profit after tax ratio is 14% to 29%. EPS is 26.93 to 18.86. That there is a downside in the EPS, reason being there is a dilution of the equity, around 200 crore infusions from the public. This amounts to dilution of the equity, and this is the main reason there is a downside of the EPS. However, considering the growth of the business, considering the profitability, increase in the profit after tax ratio, considering gross profit ratio increase, we expect that EPS to increase in future times to come. If we talk about the balance sheet of the company, it is also in the million. If we see the borrowing, which was around 70 crore, is now left with the 21 crores. Trade payable 51 crore to 48 crores. Provisions 9 crore to 4 crore. Other liabilities 23 crore to 27 crore. So we can see sharp decline in the borrowing of the company, and And if we see the plant and machinery, property, plant and machinery, there is a sharp increase from 96 crore to 182 crore. So this expansion which has been done by the company, we expect that it will contribute to the revenue of the company, it will contribute to the profit after tax of the company, and which will amounts to increase in net profit of the company. There is also capital work in progress of 43 crore. So, if we talk about cash balance, company has a 165 crore of the cash balance. There is sharp increase in trade receivable from 73 crore to 150 crore. We will elaborate this in a future in an upcoming slide. So, 165 crore is a cash and cash equivalent, 62 crore is a bank balance. The company has around 100, 200 and 25 crore cash balance available. So we can say almost IPO amount is with the company, and from the profit, company has done an expansion, company has done a capital work in progress. So if we see the cash flow of the company for complete financial year, the company has done a profit before tax of 206 crore, and there is a sharp increase in trade receivable, inventories 41 crore, there is increase in trade receivable from last year. 19 crore, there is increase in inventory from last year's, and other current assets, there is increase of 28 crore. This all has been elaborated in upcoming slide. Why there is an increase in trade receivable, why there is increase in inventory, why there is increase in other current assets of the company. So 96 crore current assets, there is an increase of 96 crore in the current assets of the company. And 19 crore, there is other financial liability, other current liability has around decreased 12 crore. So 60 crore is there change in the 60 crore the company has made payment of the
payment of the income tax. So net cash generated from the operations are 48 crore, which has been used by purchasing fixed assets of 49 crore and IPO remittance of 200 crore. The company has made the long-term borrowing repayment of 48 crore. There is some finance cost payments of 3 crores. Then there is a dividend payment of 4 crores. There is interest income of 7 crores. So 7 crores, and there is a sharp increase in the cash and cash equivalent from the existing 92 crore to 230 crore. If we talk about some ratio, so robust growth in revenue from financial year 2019 to 80 crore to 530 crore. This is 23.7% per annum increase. The capex spend has been increased in this financial year. 94.9 crore capex spend company has done. So this is going to be a major contribution in upcoming growth of the company. And the profitability, there is a 47.3% profitability increase on year basis. The financial year 19 profit after tax was 39 crore, which is increased to 151.8%. So if you see, the growth in the revenue is for 23.7%. However, the profit after tax is increased to 47.3%. This we can see the company is utilizing the contribution ratio of the company is increasing on year basis. So return on net worth 42% to 24.7%. This is mainly because of there is a dilution of the equity, and the future in this return on net worth is expected to be increased when this capex expand. The company is going to generate revenue as well as profitability. The leverage ratio known as the debt equity ratio is from 0.94% to 0.04. So company has a negligible debt. Strong operations performance. Company has done a very strong operations percent growth. Inventory so company has a 70. These all are the figures are in days. In financial year, company has a 76 days in 76 days inventory. Now company has a 172 days in inventory. Receivable, company has 68 days receivable. Now it is a 73 days. Payable from 78 days to 49 days. So net working capital cycle is 196%. The reason of these increase in inventories and receivable has been explained very well by the company. Shutdown of the plant in China due to pollution related issue. The company has to maintain more inventory, so the operation should not suffer. COVID related lockdown, shortage of containers and vessels. Ukraine crisis resulted into price hike and shortage in the supply of the material. Suez Canal blockage. So these all are the reason which is contributing the company to maintain more inventory and the payables. The company is utilizing their available cash by making a timely payment to timely payment of payable. So receivable ratio is maintained. However, there is increase in receivable due to increase in the sales of the company. Now let us talk about some quarterly basis result of the company. There is the revenue which was in last financial year till quarter 4 was 132 crore. It is increased to 181 crore, and the EPS which was 6.6 crore is now 5.74 crore. The net profit 48 crore to 46 crore. This is all because this Ukraine crisis, increase in the prices of the raw materials. So with the ease of the operations, with the ease in the war situation of the Ukraine, we expect that this EPS will increase in times to come. So the market cap of the company is currently 2775 crore. Current price, it is as this slide is being prepared 3 days back, it was standing at 345. Now the current price is 395. 52-week high is 602. Now it is standing at and 52-week low is low is 292. Stock P is 18.3. Book value 76.5. Dividend is 0%. Return on capital employed 43. Return on equity 34.3. Face value 2. Industry P 22.5. So let us talk about some future outlook of the company.
द फ्यूचर ऑफ द कंपनी लाइज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितना आप एपीआई के लिए रिसर्च करोगे उसके हिसाब से आपके प्रोडक्ट डेवलप होंगे, आपके प्रोडक्ट डेवलप होंगे तो आपको नया मार्केट मिलेगा, या आपके ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड मार्केट में आपको पुराने कस्टमर आपको रेवेन्यू ग्रोथ दे सकते हैं। सो कंपनी ने द फ्यूचर ऑफ द कंपनी लाइज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एनहेंस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी। कंपनी ने 2 नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज पे काम कर रही है। एक एट लोटे परशुराम टू कैटर to life cycle management and further backward integration of the project, जो Q2 फाइनेंशियल ईयर 23 में ऑपरेशन होने के चांसेस है। एट अंबरनाथ टू कैटर द न्यू मोलिक्यूलस CMO CDMO बिजनेस, जो ऑपरेशन स्टार्ट होगा Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 में। दिस सेंटर विल हेल्प टू डेवलप आइडेंटिफाइड API विच विल कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्रोफाइल। जो कंपनी का ऑलरेडी प्रोफाइल है उसको और स्ट्रेंथन करेंगे। Further control drugs portfolio to be expanded. Identification of potential API have been done which are in development pipeline. Also evaluating product portfolio expansion by selecting product in anti-diabetics and CNC range. Naya market. Company is currently doing business with 1200 customers and has presence in 86 countries. The geographical locations are distributed within the sales teams to focus on sustaining the business and expansion through new acquisitions. कंपनी ने अपनी टीम बना रखी है जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, और उसके हिसाब से कंपनी एक्सपांड, नए मार्केट को भी एक्सपांड करने की कोशिश कर रही है अपने ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड एपीआई और नए एपीआई के लिए। द रेगुलेटरी मार्केट, this is a regulated market. Regulatory team is registered this project with the filing DMA. Sales team is in discussion with the new customer to qualify Supriya as a source and started sending samples and supply API for their validations of product. नए नए कस्टमर को एक्सप्रोच कर रही है, नई नई सेल्स टीम को डेवलप कर रही है. सो ओवरऑल वी कैन सी दैट कंपनी इज एक्सपांडिंग ऑल राउंड्स. The company has taken additional step for business expansion around the globe, especially in the North America market, Japan, Australia, and New Zealand. So, CMO, CDMO space company understand large scale, especially chemical manufacturing, and has experience in handling hazardous complex process chemistry. So, जो chemical manufacturing process है थोड़ी hazardous होती है, but company का इसमें already experience है. अलग अलग कंपनीज के साथ इसने डिस्कशन चालू किया है और अपने प्रोडक्ट्स को और डेवलप करना चाहती है. कंपनी ने अपने कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए बैकग्राउंड इंटीग्रेशन चालू किया एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए, और करंटली कंपनी प्लान कर रही है अपनी करंटली प्लांट आर रनिंग एट फुल कैपेसिटी और उसको और एक्सपांड करने की कोशिश कर रही है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट नए सेंटर के द्वारा, जो भी है ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस स्लाइड. दिस जो पर्टिकुलर फैसिलिटीज है जो 2023 फाइनेंशियल ईयर में ऑपरेशनल होगी, जिनका और 340 किलोलीटर की और कैपेसिटी कंपनी में ऐड करेगी, और ओल्ड कैपेसिटी 145 केएल कैपेसिटी में 340 किलो और ऐड करेगी. अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक विद कैपेसिटी ऑफ 70 केएल along with a new research and development facility pilot plant is also being set up in Ambernath. With this project, the total capacity will increase from 547 KL to 810 KL. So this will be almost 30% increase in Q1 24. The existing plot at Lotte, Parsuram and Ambernath will be fully utilized once these projects are open. This company is very optimistic that they would be able to utilize their capacity in full. Land acquisition, कंपनी ने अभी 80,000 स्क्वायर मीटर की लीज पे लैंड एक्वायर किया MIDC से for their pharmaceutical business. Since the existing facility are expected to be fully utilized by Q1 24, तो उसके बाद Q1 24 के बाद भी कंपनी नए फर्दर एक्सपांशन के लिए कंपनी ने ये लैंड एक्वायर किया है. So overall future outlook of the company look very bright. We expect that the revenue of the company will keep growing with the range of 23 to 25%, and if company is able to maintain the same level of EBITDA, we expect that it is a long-term investment share where the investment can be done in SIP manner in the range of 300 to 450 for a target price. We expect for a target price of for a long-term target price of 2 to 3 times. हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपको कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बताया गया था, अब हम बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में. कंपनी के टेक्निकल्स देखा जाए तो ये सुप्रिया लाइफ साइंस का चार्ट है जो कि डेली टाइम फ्रेम पर है. अगर हम कंपनी का मेजर ट्रेंड देखते हैं तो जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, और जो कंपनी का जो पहले सपोर्ट बना हुआ था
वही अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, उस रेजिस्टेंस को भी इस कंपनी ने प्राइस ने ब्रेक कर दिया है और वही सब सपोर्ट रिटेस्ट देके अब ये वापस अप मूव देने के लिए रेडी हो चुका है। तो इसका अगर हम फर्स्ट टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट विल बी 510 टू 512 के बीच में होगा और सेकंड टारगेट विल बी 580 टू 590 के बीच में हो सकता है। And we are not SEBI registered, so please take advice from your financial advisor before any taking the call. Thank you.